Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome to yet another video. So today's video is all about this makeup look which I have created. Really simple, really on the go and a basic makeup look. Let's see how I created this look. So I have used this Maybelline Master Prime primer and I'm just gonna apply this on the area where I have pores and also जहाँ से मेरी skin oil release करती है. This is an important and crucial step. Next up guys, I'm going to use a concealer. Here I'm not using any foundation, just a concealer to spot correct and wherever I have to hide the imperfections. So basically मैंने इसको अपने under eyes में, bridge of my nose, around my forehead and around my mouth मैंने apply कर लिया है. Now with the help of this dense buffer brush मैं इससे अपने पूरे foundation या पूरे concealer को अच्छे से blend कर लूँगी and I'm just gonna spread this all over my face. And this is like my favorite concealer. ये perfect shade है मेरे skin tone के, so it really act as a nice concealer and foundation at the same time. बहुत easily blend हो जाता है. Next up I'm using my favorite compact powder to set everything into place. You can use whatever product you have and मैं इससे अपने सारे cream product को अच्छे से set कर लूँगी and I'm just mainly gonna concentrate on the area like my under eyes because that's the area जो बहुत जल्दी crease हो जाता है, also around my mouth. And I really like this compact powder. It is little expensive but worth your money. Next up I'm just going to give some definition to my face. For that I'm using this Flower Beauty Sculpting and Contour Palette and मैं इसमें से ये contour shade pick करके अपने face को अच्छे से contour करूँगी like the hollow of my cheeks, forehead and also my jawline. Next up I'm using the same blush from the same palette and I'm just going to apply that on the apple of my cheeks. Like मैं इसको apply करके I'm just gonna take it upwards. Next up I'm going to use the same highlighter from the same palette and this highlighter is so amazing. You guys can see already, it just so amazing. एंड मैंने इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर लिया है लाइक जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट हिट होती है लाइक द चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ माई नोज, फोरहेड एंड ऑल्सो अराउंड माई माउथ. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू फिल अप माई आईब्राउज. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस एल्फ आईब्राउ पेंसिल एंड आई थिंक दिस इज़ इन द शेड डार्क ब्राउन. सो फर्स्ट मैं अपने आईब्राउ को अच्छे से कोम कर लूँगी एंड देन आई एम जस्ट गोना आउटलाइन माई आईब्राउ यूजिंग द पेंसिल एंड अच्छे से मैं सारे गैप्स को फिलअप कर लूँगी एंड ग्रेजुअली मैं अपने eyebrow को brush भी करती रहूँगी to distribute all the product. Next up I'm going to pick up this Huda Beauty Haze palette and I'm just gonna, by the way I'm in the shade Sand. मैं ये shade को pick up करके अच्छे से अपने crease में buff करूँगी and it gonna act as my transition shade. Next up मैंने ये shade को pick किया which is little darker than the previous shade and मैं इसको अपने outer V पे ज़्यादा concentrate करूँगी, also close to my upper lash line just to give some kind of depth and dimension. एंड मैं इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू पिक अप दिस शेड विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर एंड मैं इसको अपने पूरे आईलिड्स पे अच्छे से लगा लूँगी एंड येस आई एम डन. एंड सेम शेड आई एम गोना पिक अप एंड आई एम गोना अप्लाई दैट ऑन माई लोअर लैश लाइन. द मेकअप इज़ सो सिंपल गाइज. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू यूज़ दिस के ब्यूटी खोल पेंसिल जिससे मैं अपने टाइट लाइन को वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन करूँगी एंड देन विद द सेम ब्रश आई एम जस्ट गोइंग टू स्मज दैट आउट. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू यूज़ दिस Too Faced mascara and I'm just gonna coat the top and bottom lashes with the same. And it's time to apply some lipstick and I'm using this MAC Meher lipstick. This is like my favorite shade and I'm just gonna add some shine. For that I'm using this elf lip lacquer in the shade mauve glitz and yes, this is my final look and I hope you liked it as much as I do. Please share with your friends and family and I'll see you in my next video. Till then, bye.